डॉट ऐसे आप कीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ओके जुपिटर और जुपिटर नोटबुक, ये यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कीजिए, एक इंस्टेंस क्रिएट करें। खाली इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत देर अगर आप आइडल रह जाएंगे तो वो उसका कर्नल स्टॉप कर देता है। ये आपका जुपिटर का इंटरफेस खुल गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दैट केस यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग। ओके, आप ये देखिए 2+3, अब डायरेक्टली यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन वाले में आपका थोड़ा स्लो होता है कंपैरेटिवली लोकल से, बस इतना ही है। बट अभी क्या करने के लिए आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दिस कुड बी मोर हैंडी फॉर यू। ओनली थिंग इज दैट अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपकी फाइल चली जाएगी। तब उस केस में क्या करना है, आपको अपना जो ये है फाइल है दैट यू कैन डाउनलोड। ओके, फाइल डाउनलोड करने का एंड उसके बाद आपका वो नोटबुक जो होगा डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। दैट यू कैन डू। क्या किया आपने, ऑनलाइन किया, ट्राई जुपिटर ऑनलाइन, और ये आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करके देता है। अगर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है, बस इतना ही है इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऑनलाइन जाके हमने जुपिटर नोटबुक यूज किया। ओके, जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन। Okay, so by the time other people come, let me do other practicals. Okay.
Okay, let's start. We will be doing our practicals as per our syllabus. Okay, so syllabus में पहला practical जो है आपका वो आपका है practical up sampling and down sampling on image or speech signals, and then you have a fast Fourier transform to compute the DFT. Now, before we do this, okay, so we can have just a quick recall. Okay, in the initial lecture, we just said that when you are going to do the image processing or signal processing, um, you can discuss about two domains for the operation. One is the spatial domain and the another is the frequency domain. So specifically अगर आप images के साथ कहें तो images दोनों domain में operate की जा सकती हैं, spatial और as well as frequency domain. तो we will just try to see both spatial and the frequency domain operations basically here. अब जहाँ तक डेटा लेने की बात है, okay, we will be more or less dealing with the image signals. However, you can also deal with the sound signals. Sound signals के लिए आपको थोड़ा सा different way use करना पड़ेगा. So we'll be basically trying to right now focus on to the image signals. So upsampling and downsampling is the first practical, and then you have the fast Fourier transform and other related things. Now, as far as this particular practical or set of practicals are concerned, we will be basically making use of several inbuilt libraries. Now, as far as the libraries are concerned, okay, so these libraries may not be by default installed in your what do you say notebook. Okay, so in that case, you need to install them if they are not already installed. तो by default अगर आपको कोई चीज़ install करनी है तो आपके पास command है. Okay, generally the command name is, अगर आप notebook में ही install कर रहे हैं तो in that case exclamation pip install, okay, and you have package name. ठीक है, जो भी package name होगा वो आप यहाँ पे install करेंगे and you will be able to install the package. अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे इंस्टॉल करने वाले हैं then in that case you will be just removing that exclamation and you will be able to install the package name. ये है आपका package installation का syntax, and in my case possibly I have basically installed all the packages, so therefore I will be able to have all of them, but you may be required to install them. Okay, so sometimes it is possible that based on the version of the what do you say Python that you are using, some of the packages may or may not be available, okay, in that version. So therefore you have to choose another, okay, either you have to go for the specific version or you need to use another function or another library which will do the same thing. तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो हम एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके देखेंगे, एंड more than one library or the packages will try to utilize in order to do the same thing. Okay, so that is what is basically the syntax that you will be having. So let me just have some basic declaration. The sum of the popular libraries and the packages that I will need. Okay, so वो हम पहले ही सब कुछ include करके रख लेते हैं, and then we will be basically using them. So, okay, so there's one package or library called as a PIL, and I will be using this package for importing an image. So I will say from PIL import image. Okay, so अगर ये नहीं होगी तो in that case you need to install them, and I have given you the syntax for the same. There's another package that I will use is that skimage, okay, .io, and from there I will be importing imread, okay, imshow, and say show. These are some of the functions that I will use, and this is all related with image operations. Then I will say import scipy, okay, dot fft pack. Okay, ये वाला scipy fft pack is basically used for frequency domain operation. जब आप fast Fourier transform करना चाहते हैं तब के लिए, as fp is basically nothing but an alias for the fft pack. Okay, so we are going to use an alias name fft pack के लिए fp. Then I say from skimage import data,
and img underscore as float. Okay, some of these I may not be using as of now, but this is the some of the things that you will be more frequently using in even rest of the practicals. Okay, so you can just use this. Okay, so img image as float. फिर इसके अलावा हम एक और यूज करेंगे फ्रॉम scipy import nd image. ओके, एंड हम एक मिसलेनियस यूज करेंगे और एक सिग्नल यूज करेंगे. There is one more thing that if you somebody is using the earlier version of Jupyter or the Python, in that case you can include from scipy dot stats import signal टू नॉइस. ये आपका पहले एक फंक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी ये आपको इसमें नहीं मिलेगा इन द लेटर वर्जन ऑफ द Python. So therefore what we need to do is that we need to basically write this. Okay, because when you are going to work with signals, so many of the time you need to calculate the SNR, signal to noise ratio. So that is for that this function was being required. So we will write our own function for the same. Then you are going to have मान लीजिए अगर आप कलर इमेजेस हैंडल कर रहे हैं, तो इन दैट केस कलर इमेजेस के लिए आप क्या करते हैं, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए RGB टू ग्रे बुलाते हैं. सो इन दैट केस फ्रॉम आई कैन से SK image dot color import I say RGB to gray. ये हम फंक्शन यूज करेंगे. Then I am going to have from SK image dot transform. Okay, import rescale. Okay, basically this is going to be upsampling and downsampling के लिए हम हमारे इमेज को या सिग्नल को rescaling करेंगे. We can upscale it also and downscale it also. Then you are going to have import matplotlib dot pylab as pylab. Okay, so basically for plotting the figures I am going to use this. Then import numpy as np. Np is the alias for my numpy. फिर उसके बाद import numpy dot fft. Okay, so fft आप numpy का भी यूज कर सकते हैं या फिर scipy का भी यूज कर सकते हैं. This is what the most of the libraries that you will be coming across and you will be using it. Okay, so let me just see that if it is available. अगर नहीं होगा तो it will give you error and then you need to install them. So star means basically it is processing, still processing. अगर कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, then in that case you need to restart your Jupyter and then you have to go ahead. The server is idle for much time, so sometimes it takes time. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, I am basically having in my local folder, there is a folder called an images. ओके, इमेजेस फोल्डर, और इमेजेस के अंदर मेरे पास कई सारे इमेजेस हैं. दिस टेस्ट इमेजेस आई एम गोइंग टू यूज. ओके, आई विल बी आल्सो गिविंग यू दिस टेस्ट इमेजेस फॉर यू. ओके, तो बाद आप में यूज कर सकते हैं. फिलहाल अभी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. So now what I will do is that I will load an image. Let me say image object is im. Okay, I say image dot open and I will open my image. So images folder के अंदर मेरे पास है एक cgvr. Okay, dot png. Okay, so this is what is basically a file. I want to just load this and into image, and then I want to show that. Okay, so I say pylab dot im show. ये हो गया im. So I am opening my image, and then I say pylab dot show. Okay. So let's see that whether the image is loaded properly. Yes, image is loaded, and we can just see. If you are not going to give any additional parameter or constraint, in that case it will show the image and its dimensions also. Okay, so that's what you say, that you have seen that this is image and the image axis is also being shown. Now let us try to do the upsampling wala part. Upsampling of image. Okay, and for upsampling, what you can do is that we can apply the interpolation, and there are various different types of interpolation that you can do. Okay, so I will just use the nearest
neighbor interpolation initially, nearest neighbor interpolation. So let me just say the image is interpolated image. Okay, so हमने image 1 किया था, so I am saying NN image, or let me say IM1. Okay, this is an interpolated image. I say IM dot, what is IM? IM is nothing but original image. I say resize हम use कर रहे हैं यहाँ पे, resize IM dot width. Okay, I'm just scaling it up. Okay, so 5. Okay, IM dot height. Okay, it's a 5. एंड फिर उसके बाद हम इंटरपोलेशन क्या करेंगे, जो बीच के पॉइंट्स जो नए आएंगे उसको इंटरपोलेशन करेंगे. इंटरपोलेशन के लिए आई एम गोइंग टू यूज इमेज डॉट NEAREST. ओके, नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट. ओके, ये हो गया आपका इंटरपोलेशन. नाउ यू कैन जस्ट प्लॉट दैट. ओके, से पाइलैब डॉट फिगर. ओके, आई से फिग साइज equal to up, you can just give your figure size. Let me just keep it simple, 10,10. Okay, and then I say pylab dot IM show, and हमारा transform image क्या है, हमारा image है IM1. Okay, and then I say pylab dot show. Here यहाँ पे red क्यों दिख रही है, एक open close. Yes, यहाँ पे एक और होना चाहिए. Now it is fine. So let's run this. Yeah, now you see that it has been scaled. Okay, upsampling हो गया आपका, and the intermediary points have been obtained using the nearest neighbor interpolation. Similarly, what I can do is that I can have other forms of interpolation, and I can say just copy paste, and this time other type of interpolation में आपके पास एक है bilinear interpolation. Bilinear bilinear, right? Bilinear interpolation. इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे only this much change. I say bilinear, bilinear. तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज मोर और लेस द इमेज क्वालिटी जो है वो उतना ही आपको दिखेगा. बट इफ देयर इज अ डिफरेंट इमेज, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट. एक और तरीका लेते हैं हम, इसको लेते हैं बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन. क्या है बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन? बाई क्यूबिक के लिए यू कैन जस्ट चेंज दिस. ओके, सो there are various types of interpolation that you can use. So bicubic में भी आपको लगभग उसी जैसा दिखता है. यहाँ पे इसमें ज़्यादा चेंज आपको नहीं समझ में आ रहा है. So now let's do the down sampling. Okay, let's say down sampling. Down sampling कर रहे हैं. So I am going to have same image. I am equal to image dot open. Let's type, this time use another function and another image itself. So I say images में से python ds.jpg. Okay, these images are already there in my images folder. Okay, अगर नहीं होगा तो आपको error आएगा, or you can use any other image. Now there are some specific functions which will be working on specific type of formats, so accordingly you have to use them. I am just trying to demonstrate the very usage of various different functions and different format types. So I say I am show, हम नया image load कर रहे हैं, and this time जब आप करते हैं तो this is going to show you in a photo viewer. Okay, so in this case what is going to happen is एक सेपरेट विंडो खोलेगा और उसके अंदर दिखाएगा. प्रीवियस केस में देखिए आपका आउटपुट उसी विंडो में दिखा रहा था. अगर आपको अलग से फोटो व्यूअर में खोलना है तो इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज दिस. सो ओके, आई एम सेइंग शो फोटो व्यूअर. ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस, सो इट विल बी शोइंग यू इनटू अ सेपरेट विंडो. आई एम शो
im and you have pylab.show. ठीक है, ये हो गया आपका, वापस से आपने इमेज ले लिया. ओके, क्या हो गया? आई एम शो इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर. आई एम शो, पाइलैब की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई. अब क्या बच गया? पाइलैब आई एम शो, आई एम पाइलैब डॉट शो में आई एम शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ARR. सॉरी, दिस इज आई एम डॉट शो. सॉरी, अगर आपको अलग से विंडो में चाहिए तो यू कैन जस्ट से आई एम डॉट शो. सो ये एक अलग से विंडो में दिखाएगा आपको. ओके, विच opens a separate window on my desktop. Okay, and that shows there. और जो दूसरा वाला है, ये रेगुलर वाला है, ये आपको ये यहीं पे दिखाता है. सो देयर आर टू आउटपुट दैट हैव बीन ऑब्टेन. एक यहाँ पे ही दिख रहा है. अगर आपको अलग से विंडो में चाहिए तो इन दैट केस यू कैन शो आई एम डॉट शो एंड दिस विल ओपन अ सेपरेट फोटो व्यूअर फॉर यू. Okay, so you can just comment this because anyhow you wanted to have your output there itself. ये आपका image हो गया. We are using another image now. We will be trying to do the down sampling. So अभी इस केस में, पिछले केस में आपने मल्टीप्लाई किया था, इस फेल केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप उसको डिवाइड कर दीजिए. So in that case that is going to be down sampling. So I am saying that आपका यही कोड okay, and then I am going to resize it. I am equal to I am dot resize. Okay, so I am not creating another file. मैं उसी में उसको अपडेट कर रहा हूँ. Resize पहला था I am dot width. Let's divide by 5. Okay, I am dot height divide by 5. Okay, एक कम हो गया. Okay, so yes. अरे बाप रे. I am dot width. फिर इसके बाद pylab dot figure, I say fig size इक्वल टू, आपको कुछ और देना है तो आप दूसरे डायमेंशन भी दे सकते हैं. अकॉर्डिंगली इट विल प्लॉट. pylab डॉट आई एम शो, आई एम ओरिजिनल इमेज आपने दिखा दी जो आपकी चेंज होके आई. एंड आई से pylab डॉट शो. ये हो गया pylab. Okay, so this is basically a downscaled one. Obviously, you'll see that there may be some kind of a pixelation that may be happening after the downscaling because you want to show the image in a certain resolution or certain dimensions. Now, one of the very important thing that I can also show you here is that concept of anti-aliasing. Okay, anti-aliasing. So I say I am equal to I am dot resize. I say I am dot width slash 5. I am dot height slash 5. Image dot anti-aliasing. Anti-aliasing. Okay, anti-aliasing आपने ग्राफिक्स पढ़ा हो तो you must remember that. pylab dot figure, let me say fig size equal to same, let's say n. pylab dot I am show and इसमें image and then I say pylab dot show. अब इसको देखिए, एंटी-अलाइजिंग के बाद यू शुड बी गेटिंग अ ब्लॉकिंग इफेक्ट. क्या बच गया इसको? एंटी
ALIAS, NTLIS तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अननोन रीसैम्पलिंग फिल्टर, इमेज नियरेस्ट जीरो रीसैम्पलिंग लाइन कॉस बाइलिनियर। अच्छा, तो उसको NTLIS मिला ही नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? इमेज डॉट NTLIS, ALIAS तो होना तो चाहिए था। It should have been, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है शायद। एक मिनट, अभी आया, there was a spelling mistake. So now this is what anti-aliasing is. If you are going to have say less resolution on the horizontal scale, so in that case more number of blocks can be painted with the same color. Okay, and you can show that. So basically what we are trying to do is that basically handling of images and doing some basic pixel manipulation and showing it onto the screen. Now let's try to do something different, and we will just try to show anti-aliasing with different resolutions. Okay, हमने ये एक करके देखा, हम इसको एक अलग तरीके से देखते हैं अभी. Now I'm saying I am equal to I am read. Let me say इसके अंदर हमारे पास है images में है rajesh.jpg. Okay, so I'm assuming that there is a file called as rajesh.jpg, and I say IM1, that is the change image is going to be IM.copy. So I'm creating a copy of the original image into IM1 or the new image. Then I say pylab dot figure and figure का size equal to, let's say this time make it 20 and 15 ले लेते हैं. ये हो गया आपका figure, and now I want to basically show the image anti-aliasing with different resolution. So for that I will be using iteration. So for iterating variable I in range, let's say 4. Okay, so you will have 1 2 3 4 like this. I want to basically do what? I want to have a figure का जिसका मुझे टाइटल देना होगा और इमेज पास करना होगा. Okay, and for that I can just basically use the subplot. I can say pylab dot subplot, and let's say 2x2 image, 2x2 grid में हम करेंगे, and we will just generalize it. I'll say that I plus 1. So कौन सा वाला कर रहे हैं? पहली बार वो आपका 0 plus 1, that is first one, फिर second, third, and then fourth. That is what we are going to plot. इसके अंदर what we will do is that we will say pylab dot IMShow, और हम क्या दिखाएंगे? IM1 जो हमने कॉपी बनाई है, एंड सी मैप हम देंगे यहाँ पे ग्रे. ओके, ग्रे स्केल वाला है, and then we will be saying pylab का axis, pylab dot axis, and हम इसको दे देते हैं off. I don't want to show these numbers that are showing on the axis. ठीक है, एक्सेस ऑफ हो जाएगा हर एक इमेज के लिए जो आप प्लॉट करेंगे. एंड देन आई विल से pylab डॉट टाइटल. ओके, pylab डॉट टाइटल, हम टाइटल में देंगे इमेज साइज. ओके, लेट्स से इक्वल टू इमेज साइज इक्वल टू हमने कर दिया. लेट्स से कॉन्कैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग का डायमेंशन चाहिए. सो आई एम सेइंग IM1 हमारा ये इमेज है, डॉट शेप हम यूज करेंगे. शेप आपका 0 और 1 पे आपको रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं बेसिकली. सो आई से शेप ऑफ 1. ओके, एंड लेट मी से अगेन द कॉन्कैटिनेशन, एंड प्रिंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, एंड देन आई से कॉन्कैटिनेशन str ऑफ IM1 डॉट शेप 0.
सो इससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू शो द डायमेंशंस ऑफ आवर इमेज बेसिकली आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे एंड देन वी विल डू द रीस्केलिंग आई एम वन इक्वल टू ऐसे रीस्केल हमने वहाँ ऊपर वो पैकेज इंक्लूड किया है सो आई एम रीस्केलिंग ई एम एन वन एंड स्केलिंग फैक्टर जो हम यूज कर रहे हैं हम कह रहे हैं 50%। तो जितना भी ओरिजिनल रेजोल्यूशन रहेगा उसका 50% आपका हो जाएगा। सो इफ इट इज गोइंग टू बी 50 दैट मीन्स पहले अगर 100 by 100 था तो अभी 50 by 50 मतलब उतना ही आपको 50 ब्लॉक्स में आपको प्लॉट करना है। देन आई से multi channel equal to true. Okay, that means it is going to be a color image. If it is going to be false, then in that case वो black and white के लिए होगा। Let's say anti aliasing भी लेते हैं, anti aliasing ALAISING anti aliasing is equal to say false। हम एंटी अलाइजिंग नहीं कर रहे हैं। इवन आप एंटी अलाइजिंग करेंगे भी तो कोई खास शायद इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ये हो गया आपका लूप एंड देन आई से पाइलैब डॉट सब प्लॉट ओके अंडरस्कोर एडजस्ट। ओके डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, हम यहाँ पे सब प्लॉट को एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस हम डिफरेंट डायग्राम के बीच में स्पेसिफाई कर सकें। सो आई एम सेइंग दैट W space is equal to 0.1 and H space okay is equal to 0.1। आपको अगर और चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं। This is there and then we can just go for the pylab dot show। ठीक है, so ये हो गया आपका this। Now let us just try to see what happens if there is no error। ओके इनवैलिड सिंटैक्स आई एम वन रीस्केल में कहाँ पे एंटी अलाइजिंग आज हमने ओके कॉमा नहीं दिया। अब आया एरर क्या आया इसको नो सच फाइल RDNC राजेश डॉट जेपीजी नहीं मिला भाई को। ओके हाँ यस जेपीजी फाइल नहीं है आई एम हैविंग बेसिकली पीएनजी फाइल। तो जो फाइल रहेगा वही आपको लोड करेगा एंड दिस टाइम क्या हो गया unsupported int and str unsupported operator for plus so ये इसको concatenation operator नहीं दे रहा है। okay let's say unsupported operator type for plus और आपको यहाँ देता है एरर। यस 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 हमने इसको बंद नहीं किया वी शुड हैव क्लोज्ड दैट। तो अब इसके हिसाब से ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब आया एरर क्या आ गया देखो इमेज साइज तो आ गया रीस्केल गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एंटी एलाइसिंग का स्पेलिंग एंटी अलाइजिंग का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा ALIASING। ठीक है सो अभी कुछ बच गया अभी भी एरर है पायलट सब प्लॉट एडजस्ट मॉड्यूल पाइलैब प्लॉटलिब हैज नो एट्रीब्यूट सब प्लॉट एडजस्ट। हाँ यस इट हैज टू बी सब प्लॉट्स बिकॉज मल्टीपल आप कर रहे हैं ना। या नाउ जस्ट सी द आउटपुट फॉर दिस वाज द ओरिजिनल इमेज ऑफ 434x426। ये इसका डायमेंशन था पहली बार आइट्रेशन में जब आया वो तब जब दूसरी बार आया तो आपका ये इमेज है एंड दिस इज 217 by 213। नाउ यू नीड टू सी दैट दिस इज बेसिकली 50% ऑफ द प्रीवियस डायमेंशन। अब इस केस में आपको आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है
लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं आप, इमेज साइज जब इसका 50% हुआ 217 का 108 एंड 106, अब यहाँ पे पिक्सेलेशन या ब्लॉकिंग इफेक्ट आपको दिखाई देने लगा है. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर जब हमने सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के बारे में बात किया था, तो इफ यू हैव क्लोजली स्पेस्ड सैम्पलिंग, okay, or the pixel size or the blocks of painting, so according the quality of the image will be looking. So I have just tried to show it according to, so scaling factor जो है हमने यहाँ पे किया है 50% कर दिया है. So every time the scaling factor is 50%, तो 50% आपके merge होके एक ही हो जाएंगे. So this is what is basically going to happen. Now let us try to do and calculate the signal to noise ratio now. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसी इमेज के लिए we will try to show the signal to noise ratio, and we'll try to see that ki how and what is the effect onto the color of the image. So let me just reuse this. Let's say हम यही यूज करते हैं, हमने यही यूज कर लिया. फिर उसके बाद हम हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इफ यू रिमेंबर आई जस्ट सेड दैट देयर वाज अ पैकेज व्हिच वाज हैविंग अ सिग्नल टू नॉइस रेशियो. अब वो नहीं है तो हम हमारा खुद का लिखते हैं. सो एज्यूमिंग दैट वी अंडरस्टैंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल टू नॉइस, मैं मेरा खुद का फंक्शन लिख रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू पास ए एंड एक्सिस आप डिफॉल्ट 0 दे रहे हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप दे रहे हैं. आप फंक्शन लिखा हमने, as any array and जो भी आप पास कर रहे हैं उसका आप np dot as any array निकालेंगे. You will calculate m, that is going to be mean, so I will say a dot mean of axis जो भी आपने पास किया हुआ है. Then I will say standard deviation हम calculate करेंगे, so I am saying a dot std, I say axis equal to axis, and degree of freedom आप ले लेंगे DOF equal to DOF. ये हो गया आपका, and then we will be returning what we return. We have to return the signal to noise ratio, जो कि हमारा रिटर्न करेगा np dot where, okay, sd equal to 0, okay, 0, and m by sd. This is what I will be collecting at my receiver's end. Now let's say Scilab dot figure, and I say fig size equal to 15 से 20. आप कोई और भी साइज देना चाहें तो दे दीजिए. एक कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, क्या हो गया इसको, ये. Then we will be basically trying to obtain the number of colors, okay, in the image. So हम क्या करेंगे, हम कम number of color list बनाते हैं. There is a variable number of colors list. Okay, ये हम calculate करेंगे, and I will get it as, okay, by every time different value has to be there. So I say left shift by 1. Okay, left shift by 1 अगर आप करते हैं तो in that case you are basically dividing by 2. Okay, if you are going to do it right shift by 1, so multiply by 2. So I'm saying that for n in range हम लेते हैं 8 to 0, और हम इसको स्टेप देते हैं -1 का. ठीक है, you are going to have, then we will have SNR list, and initially let's say empty. क्या हो गया यहाँ पे, कहाँ से आ गया, Okay, so SNR list is equal to empty.
ये हो गया SNR list. Now let's say I equal to 1 and now we will be plotting the same जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरीके से करेंगे, but this time we will try to print the number of colors आपके इमेज में कितने हैं और सिग्नल टू नॉइस रेशियो कितना है ये कैलकुलेट करेंगे. So I'm going to use for number of colors in number of colors list. Okay, हम क्या करेंगे, we will say im1 that is modified image im1 is equal to im dot convert and I say p that is palette and हम दे देंगे palette is equal to image dot adaptive palette हम यूज करेंगे. adaptive colors आप ले लेंगे नंबर ऑफ कलर्स से. कलर्स ये हो गया आपका. देन वी विल से pylab dot subplot and this time we'll say 4 cross 2 हम लेते हैं. So this is going to be 4 cross 2 comma I. Okay, and I say pylab dot im show हम दिखाएंगे im1 हमारा image and then I say pylab dot axis off हमें axis की जरूरत नहीं है. Then I will calculate my SNR list SNR underscore list dot append. Okay, and I will call my function that I have written that is signal to noise ratio. Okay, signal to noise noise and हम भेजेंगे हमारा ओरिजिनल इमेज एंड हम एक्सेस कुछ नहीं भेज रहे हैं. none. ये हो गया आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो. एंड देन आई से pylab डॉट टाइटल अगर आपको टाइटल चाहिए तो, एंड आई वांट टू शो द टाइटल एज बेसिकली द नंबर ऑफ कलर्स एंड द व्हाट इज से सिग्नल टू नॉइस रेशियो. सो टाइटल में हम दे देते हैं image with so many number of colors is equal to and I say plus concatenation करते हैं string number of colors फिर उसके बाद we will say signal to noise ratio SNR. I think my system just went off. Okay, am I audible? Okay, thank you. चलो, so अभी आगे बढ़ते हैं. So we were just writing SNR
एंड लेट्स से SNR इक्वल टू हम प्रिंट करेंगे एंड SNR इक्वल टू एंड वो भी हम कॉन्कैटिनेट करके कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज STR NP डॉट राउंड SNR SNR let me say I say STR NP dot round SNR list okay list I minus 1 and हम rounding factor दे दिए है 3 and let's say size equal to 20 ये title का size हो गया and we are printing the number of colors and the signal to noise ratio and let's say I is equal to I plus 1 okay and then I will say pylab dot subplot underscore adjust w space is equal to आपको देना है let's say 0.2 दे देते हैं हम and h space हम दे देते हैं 0 दे देते हैं चलिए you can give anything accordingly the layout will change and then I say show okay so let's see if there is any error क्या है इनवैलिड सिकनेस सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे गड़बड़ है कहाँ पे है एक्सेस एक्सेस यस एक्सेस कॉमा im dot convert in numpy array object has no and convert की spelling convert convert अब क्या बच गया convert has no attribute convert convert ऐसा कैसा p palette adaptive colors number of colors convert होना तो चाहिए सही के numpy object has no attribute convert in numpy dot in array why im dot pla p dot nd array has no attribute convert okay yes wages में आ गई okay that is to be yet to be seen okay no problem I'll just figure it out by that time I can just show you the output how does it look like so if you see the output looks like this okay so when you are going to run this you will be getting your number of colors in your image okay and you will get the signal to noise ratio okay so you just say 256 next time it is 128 this is 64 this is 32 and 16 8 4 2 and so on now what you need to observe from this is that
Okay, as a what is the number of colors are decreasing, okay, the quality of the image that you can see, you will see that star there is going to be a patchy effect also, basically being appearing, okay, as the number of colors are going down. Okay, remember this is basically a two color, but that is not black and white. Okay, so you have got basically only two colors. This is four colors, this is 8, 16, and so on. This is an effectively nothing but an example of the what to say. This is quantization. Okay, quantization into the color levels. And then the next thing that we see here is that we are just trying to plot the SNR with respect to the number of colors. Okay, so initially you just see that the SNR was increasing. Okay, and after that suddenly you'll see that it is decreasing. Okay, so for two colors, four colors, and so on. और यहाँ पे आपके पास SNR कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, and then in that case it decreases. The same thing we have just plotted here as a log function. Now, this is something interesting that you need to understand. Okay, so we have basically the FFT operation. Let me just tell you that when you are going to have an what is a image. Image is basically a two-dimensional signal. Okay, wherein you have an x and y. So spatial coordinate systems are going to be there x comma y, and at x comma y or that grid or the cell, you are going to have some value, okay, which is called as digital number, and that is basically corresponding to the intensity or the color of that particular pixel. Now, while you are going to be in the spatial domain, you will see that you will be able to see them and you will be able to manipulate individual pixels. So later on जब आप neighborhood operations करेंगे तब भी आप देखेंगे pixel operation होता है. But many of the time what will happen is that you may be interested in basically trying to manipulate or transform the image, okay, not in the spatial domain but into the frequency domain. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपको ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको आपका जो इमेज है उसको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना होगा. सो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स फूरियर रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए और समथिंग सिमिलर टू दैट. देन दैट केस यू कैन मेक यूज ऑफ बेसिकली FFT fast Fourier transform. There are many various ways in which you can actually call this or you can implement it. One is basically scipy and there is another one that is the numpy. दोनों भी आपको FFT operations के लिए functions available करके देते हैं. So we have the practical number 1B, that is FFT operations, and here we are going to show, okay, the FFT operation with the help of scipy FFT pack module. So if you remember, we have imported the scipy FFT pack as FP and so on. So we will be using the same thing and we will be trying to convert a spatial domain information into a frequency domain, that is an image, to a signal representation, and then vice versa. We will be coming back from frequency to the spatial domain. Here in this case, we are not going to do any kind of modification or the manipulation into the image into the frequency domain, बस सिर्फ हम convert करेंगे स्पेशल से फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी से हम स्पेशल में वापस लाएंगे, विच इज नथिंग बट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और IFFT, एंड विच इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग दैट इमेज रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं. So if you just see this, yeah, so we are going to open our image or load our image, and I'm saying that np.array image.open images elephant.jpg. इसमें हमारे पास लोकल फोल्डर में एक इमेज है जिसका नाम है elephant. Okay, and I am what is say going to process it as a grayscale image, and you will just convert it into L. Then you will calculate the signal to noise ratio. Okay, signal to noise हमने हमारा function लिखा है, इसमें आपने पास किया image and axis, and then you will print the signal to noise ratio for the original image. मतलब before transforming into the frequency domain, we are calculating the signal to noise ratio और हम वो print करेंगे. So when you are going to print it, you will find out the signal to noise ratio आपको आ गया 2.60 something like that. Now why we are doing this? Okay, we are trying to do this just to prove that once we are converting into the signal domain, what is a frequency domain, and we are coming back to the spatial domain, हमारा image वही same है because we did not do any kind of manipulation. That also establishes one fact, that image is a representation of a signal.
तो ये हो गया आपका ओरिजिनल इमेज और उसका हो गया ओरिजिनल सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो कि 2.655 आया आपको. नाउ आई एम सेइंग दैट now let us call the fast Fourier transform FFT and IFFT. Okay, so FFT will convert the spatial domain to frequency domain. So I am saying that frequency domain representation of the original image is frequency, and FP dot FFT to IM. Okay, so we are going to have two-dimensional Fourier transform. So we are two-dimensional FFT हम calculate कर रहे हैं, and we are getting the frequency representation. And this is basically what is the image that is now in the frequency domain. अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, अब यहाँ पे आपको जो मैनिपुलेशन करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट कि हमें कुछ नहीं करना है, हम फ्रीक्वेंसी से वापस से स्पेशल डोमेन में आना चाहते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट ये fp.IFFT2 is nothing but inverse FFT you are calculating. That means frequency to, okay, spatial domain you are trying to bring it back. Okay, and you just get it, and this is basically the new file that you are going to have, or the new image that you are going to have. Now this is basically a reconstructed image. If you see frequency से spatial domain में आया है, technically speaking हमने frequency में convert किया, हमने वहाँ पे कोई manipulation नहीं किया. तो अगर manipulation नहीं किया है and हम फिर से उसको spatial domain में ला रहे हैं, तो this IM1 should be equal to IM, that is original image and reconstructed image दोनों same होना चाहिए. So to prove that this is same, what I can do is that I can recalculate the signal to noise ratio for the newly constructed spatial domain image. Okay, so I am passing IM1 x is equal to null, और जब आप ये print करेंगे signal to noise for the reconstructed one, you should expect same value. Is it same? Let's just try to see this SNR for the image obtained after reconstruction 2.655. So both values are same. That means the signal to noise ratio before conversion to frequency and after getting back to the spatial domain, both are same. Yes, if you could have done any kind of manipulation after this, then that signal to noise ratio might have changed. That is very much likely to be. Now we will just try to plot the figures also onto the screen. Okay, क्योंकि अभी हमने खाली convert किया था, we have not seen that how it looks like. Now you need to understand that original image आपका ऐसा दिखता है. When you are going to have a frequency representation, it is not going to look like this. It is going to have a different view. Okay, फिलहाल हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, हम दूसरे किसी प्रैक्टिकल में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का भी प्रिंटिंग करेंगे. नाउ आई एम सेइंग अगर ओरिजिनल से आप फ्रीक्वेंसी में गए और फ्रीक्वेंसी से जब वापस आए तो आपका हाथी उसी तरीके से दिखना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग द इमेज आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन दोनों आपका सेम है. नाउ दिस इज सेम बिकॉज वी डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो दिस इज अ रिकंस्ट्रक्टेड इमेज. So that's what we are doing it here. Assert np dot all close IM1. Make sure that the forward and inverse FFT are close to each other. Pylab dot figure आपने कर दिया. Pylab dot subplot 1x2 हम प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला फिगर जो होगा वो आपका ओरिजिनल इमेज होगा. So I am saying I am show IM, that is the original image, and color map आपने ग्रे रखा है and axis off रखा है. इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टाइटल दे देंगे ओरिजिनल इमेज, and then I am saying that 1x2 का second image. Okay, so I am saying 1x2 का second image, and this time is going to be reconstructed image, that is IM1. Okay, and you will just print that. So here in this case both of these figures look identical. The reason is very obvious, that we did not do any kind of manipulation or transformation. We just converted from spatial to frequency, and frequency से फिर हम उसे वापस ले आए spatial domain में. Now, this is also possible that you can plot the frequency representation of this elephant also when it was basically converted into frequency domain. So if you just see that, अगर मैं इसको plot करना चाहूँ frequency domain में, तो कैसा दिखेगा? This is the original elephant that you see, जो हम समझ सकते हैं, लेकिन यही आप लेके गए थे यहाँ पे FFT2 करके frequency में. तो अगर इसको plot करते तो आपको कैसा दिखता? So that's why you say that I'm just having another instance, FFT2 equal to FP dot FFT shift frequency. Okay, and I'm just trying to plot the same. So I'm saying pylab dot figure size, pylab dot I am show, and I'm going to just plot that frequency. Okay, so 20 NP dot log 10. Okay, 0.1 frequency to as type integer. Okay, so this is what we are plotting it. Okay, in for the spatial image that we had. Okay, into the
2D Fourier representation. So this is how exactly it looks like. वो आपका जो हाथी था वो इस तरीके से frequency domain में आप plot करके देख सकते हैं. Now obviously if there is going to be another image, the plot is going to be different. Okay, the focus that you just see, that the size could be different in those cases. Now the same thing you can also do with the FFT from the numpy. हमने scipy module use किया था, अभी हम FFT module use कर रहे हैं. So if you are going to use the FFT module from numpy, the similar kind of results are going to be obtained. So I'm saying that input numpy.fft as FP, and I am loading my original image, that elephant.jpg, and I'm converting it to RGB to gray. Okay, so grayscale image हो गया, and then I am saying that size of the image, and then I am calculating the frequency representation जो अभी अभी आपने ऊपर किया वैसे fp.ft2. Okay, and then we are going to get it back. Okay, get it back के लिए आप IFFT use करेंगे, inverse FFT. Okay, so fp dot inverse FFT2 by 2, because it's a two-dimensional Fourier transform that you are going to have, fast Fourier transform. Okay, and then you will calculate that and store it into im1 underscore, and then you can just plot. This is basically a 2 cross 2 that I'm trying to plot, so therefore I am going to say subplot 2 cross 2, जिसका पहला image जो होगा वो original होगा, so therefore I am passing the im1, this is the original image. दूसरा image जो होगा 2 cross 2 का वो होगा आपका signal to noise, जो आपने ये अपने frequency plot है वो जो अभी हमने ऊपर plot किया था वही चीज हम यहाँ plot कर रहे हैं. This is the representation of this original image in case of FFT. Okay, so this is basically FFT spectrum. Okay, उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. जब आप किसी चीज का कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड है तो उसका डायरेक्शन भी होगा या फिर फेस होगा. सो इन दैट केस यू कैन plot the face here. Okay, that is a third figure. So if you see that 2 to 3, I am saying that np dot angle FFT dot FFT shift frequency 1. So you are going to have the phase shift also being plotted, and then obviously after that reconstructed image आप कर रहे हैं. I am show np dot click im underscore 0 to 255 आपका जो gray shades है वो. So now you can just see that this is the original image, this is the reconstructed image, दोनों spatial domain में है. ये आपका frequency domain में आप magnitude plot कर रहे हैं और ये आपका phase shift plot कर रहे हैं. So this is how it is going to be basically seen. So I have just proved that any image is also a kind of a signal, and representations अलग-अलग हो सकते हैं. So spatial domain is basically one type of a representation. Frequency is another type of a representation that you will be having. It's the same thing जो अभी अभी हमने किया है. Same thing we are just trying to do with another image. Say for example, if you are going to have another image like this, okay, and when you do the same thing, FFT spectrum magnitude आप यहाँ देखिए, FFT का phase shift आप देखिए किस तरीके से दिख रहा है, and the reconstructed image. Now you can just see one of the very important observations. ये observation ये है कि आप इसका FFT spectrum magnitude देखिए और इसका देखिए. Okay, there is a difference obviously because the content of the image is different. Okay, amount of gray shades that you are going to have is going to be also different. Phase shift में भी आप देख सकते हैं कि it will look little bit different. Okay, you see that this is what the phase shift looks like for this particular image, while in this case phase shift जब आप कर रहे थे तो इस तरीके से दिखता है. तो composition of the image is going to be important for the representation. Okay, so ये हो गया basic image handling kind of a thing. Okay, we have done lot of thing in our theory classes. तो अगर आप देखें तो पहली चीज हमने देखी थी वो थी intensity transformations. Okay, and then we did the morphological operations, then we did segmentations and many things. So we will be trying to do the similar kind of things one by one. So let me just show you another practical. So I'm not typing everything again. Okay, I have already run that, so I'll just try to explain it with the same. Okay, and I'll provide you all the code with you so that you can try it at your own end also. And बाद में आप journal बना सकते हैं. So second program is basically write a program to demonstrate the following aspect of signal and image processing. So पहला है convolution on gray and color images, and दूसरा है template matching. Template matching हम बाद में करते हैं, हम फिलहाल convolution on the gray and color images देख रहे हैं.
ओके, एंड इसके बाद एक तीसरा जो होगा वो हम इंटेंसिटी एंड कलर ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे. सो इन दैट केस पहले हम वो कर लेते हैं, बाद में हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3. हाँ, so let us, so we will be basically doing the practical number 3, that is the image enhancement. Image enhancement is what? Image enhancement is nothing but basically trying to make your images more suitable for a specific requirement. अब ये image enhancement अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो basically we are just trying to showcase the different techniques that we have learned into the class. Now if you remember, the images can also be represented with the help of a histogram, and therefore if you are doing the histogram processing, you are ultimately going to do the image manipulation or image what is it, processing. So there are various different types of what is say libraries that you will be using. Okay, काम करूँ मैं पहले टूल को कंप्लीट कर लूँ क्या? चलो, वी विल गो इन टू द ऑर्डर इटसेल्फ, क्योंकि पहला प्रैक्टिकल किया था, सेकंड प्रैक्टिकल पहले करते हैं. सो वी विल बी डूइंग द कन्वोल्यूशन फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर द हिस्टोग्राम एंड अदर थिंग्स. ठीक है. सो वी विल बी हैविंग skimage.io. I am read, I am show and show. The color RGB to gray, this is basically used for converting a color image into the grayscale image, and numpy आप यूज कर रहे हैं, एंड scipy as usual जो पिछली बार आपने लोड किया हुआ था. नाउ लेट अस ट्राई टू implement convolution. जब आप convolution के बारे में बात करते हैं तो basically you can take two vectors and corresponding two vectors may be multiplied. Okay, that is what you are going to have. If you remember the linear filtering or the linear order processing, we just say that it was nothing but the multiplication of, say, the coefficients of the mask and the corresponding pixel value, summation of wi xi. Okay, linear combination of the multiplication of the weights of the matrix and the individual pixels. So that is what we are trying to implement it here. So we are opening the image RGB to gray. Okay, image rkm.jpg. Okay, so whatever image is there, I am assuming that it might be in the color format, so therefore I am converting into grayscale image. Now, the reason is that why we need to convert into grayscale image. The reason is very obvious, because most of the image processing applications, they are more suited for basically binary image or a grayscale image. Okay, so we just convert it and store it into IM. Then I'm saying print np.max IM. So मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं np.max एंड np.min ऑफ द ओरिजिनल इमेज. सो मैक्सिमम मेरे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे. Print im.shape, basically the dimension of the image you want to print. So in that case, if you see that आपको मिल गया maximum value or a dimension of the shape. So this is basically an image of dimension 246 cross 233. Okay, so I have just printed that. So information about the image has been obtained. Now, very interesting thing that I am trying to do. If you remember, जब आप spatial domain operation कर रहे थे तो हमने कहा था कि we will be creating a sub image or basically a mask, kernel or a filter. ठीक है, जिसके कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू थी वो डिटरमाइन करते थे कि आपके इमेज के साथ क्या होगा या क्या प्रोसेसिंग होगी. सो यू हैव अ बॉक्स कर्नल. Okay, if you remember, box kernel was nothing but simply an averaging kernel, which basically calculates the average of all the neighborhood pixels. So 3 cross 3 है तो सारे 9 के 9 के आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं. देयरफॉर बॉक्स कर्नल में सारे के सारे जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम हुआ करते थे. तो दैट इज गोइंग टू बी 1/9 इफ इट इज गोइंग टू बी 3 क्रॉस 3. अगर ये 5 क्रॉस 5 मास्क होता तो ये हो जाता था 1/25 individual coefficients marks. So what we will be trying to do is that we'll be creating a mask of basically 5 cross 5. Okay, so I am saying that कि individually जो उसके coefficients होंगे वो 5 cross 5 के क्या होंगे, 1 होंगे. So I am saying np.ones and I will arrange it as a 5 cross 5, and individual element of each of these are going to be divided by 25, because in individual coefficient क्या होना चाहिए, 1/25 होना चाहिए, because summation सबका 1 आना चाहिए. So in that case individual
कोएफिशिएंट ऑफ द मास इज गोइंग टू बी 1/25. अगर यही आपका 3x3 होता तो इन दैट केस दिस कुड हैव बीन डिवाइडेड बाय 9. अगर ये 7x7 होता तो ये 49 से डिवाइड होता था. Now, this was basically the box kernel, and then we are going to have the Laplace kernel also. Laplace kernel हम किस चीज के लिए यूज करते थे? Basically edge detection के लिए यूज करते थे, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया edge Laplace kernel. And for that, I am manually putting the values of the Laplace kernel. Okay, I am saying np dot array. पहला रो जो है वो 0 1 0, दूसरा जो है ये है 1 - 4 1, एंड तीसरा जो है ये है आपका 0 1 0. सो इफ यू रिमेम्बर, जब आपने क्या कहते हैं दिस, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव पेन, क्या देखूं मैं, 1 minute. Just a second. Just give me 1 second. Okay. So now if you just remember, जब आप Laplace calculate कर रहे थे, तो you could had a matrix which was basically 3x3. Okay, and you used to have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so I'll just try to put it across. Now look at this, what is exactly happening. जब आप लैप्लास कर रहे थे तो हमने वहाँ क्या कहा था कि हमारा जो ये वैल्यू है ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा. ओके, इसके अलावा ये जो वैल्यू थी, ये आपकी वैल्यू जो थी, ये आपकी 1 थी, दिस वाज 1, this was 1, and this was 1, and this was -4. So technically speaking, आपने क्या कहा? 0 1 0, 1 -4 1 0 1 0. ये है आपका Laplace kernel, if you remember. Okay, so that is what we want to create. So manually we are going to do it. So I'm creating a array, okay, of 3x3, where first row is 0 1 0, second row is 1 -4 1, and third row is going to be 0 1 0. ठीक है,
And now these two kernels have been made. Now what I am going to do, I am going to create a transform image. ट्रांसफॉर्म इमेज के लिए क्या है, पहली बार आप बॉक्स कर्नल लगाएंगे और दूसरी बार आप बेसिकली लेप्लाश कर्नल लगाएंगे. सो इफ यू जस्ट गो बैक हियर, ओके, you will just see that आपका जब आप बॉक्स कर्नल लगाते हैं, we are going to have box kernel. इसका इफेक्ट क्या था, ब्लरिंग. ब्लरिंग ये डिजायर्ड इफेक्ट था, but at the same time you are also going to have edges which are going to be blurred. Okay, including edges. आपका नॉइस रिमूवल हो रहा था इसकी वजह से, ओके, और ब्लरिंग हो रही थी, और बट ये भी हो रहा था. This is what is basically the effect of box kernel, that is also called as an averaging kernel. फिर दूसरा है आपका लेप्लास. लेप्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, एज डिटेक्शन. Okay, you can just say that we are going to be on the left side or the right hand side. So this is basically second order. Okay, this is going to be a second order differential. So I am saying here, first one, image blurred. Okay, blurred image आपको चाहिए, that means smoothened image चाहिए. तो I am saying that what, signal dot convol 2D. ओके, सिग्नल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ साइपाई का सिग्नल, सिग्नल डॉट कन्वॉल्व 2D, दैट इज कन्वोल्यूशन, टू डायमेंशनल कन्वोल्यूशन. किसके बीच में, इमेज और बॉक्स कर्नल में. नाउ रिमेंबर, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी आपका इमेज था, मान लीजिए ये आपका इमेज था और आपके पास एक छोटा सा कर्नल था, तो आप क्या करते हैं, इस कर्नल को आप ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, एंड सो ऑन. तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं. सो इन दैट के समेशन WI आप कैलकुलेट कर रहे थे. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू डू द कन्वोल्यूशन, टू डायमेंशनल कन्वोल्यूशन. किसके बीच में, ये आपका इमेज है और ये आपका क्या है, बॉक्स कर्नल. ओके, दोनों के बीच में आप कन्वोल्यूशन करते हैं और उसके बाद नई वैल्यू निकालते हैं. सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट. ओके, सो आई एम अ बॉक्स कर्नल, इमेज, ओरिजिनल इमेज, बॉक्स कर्नल, और ये मिल गया ब्लड वर्जन. एडजेस वाला क्या है, इट इज गोइंग टू बी आउटपुट विच इज गोइंग टू शो यू द एडजेस. उसके लिए आप np डॉट क्लिक सिग्नल डॉट कन्वॉल्व 2D ओरिजिनल इमेज एंड लैप्लाश कर्नल आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं. Okay, so what will give you? This is going to give you basically nothing but the edges that you are going to have. This is going to give you the blurred version of that. Now let us just try to plot them. Okay, so you can just extract those values as a tuple. I say figure comma axis equal to pylab dot subplot, number of columns 3, share x equal to true. You want to share the x-axis. Okay, share y is equal to true, share the y-axis. Okay, and then figure का size आपने plot कर दिया. Okay, now I am just trying to show the axis dot I am show I am cmap pylab dot cm dot gray, and then उसका टाइटल कर दिया है आपने ओरिजिनल इमेज साइज इक्वल टू 20. देन उसके बाद ब्लर्ड वर्जन आपने दिखाया, उसका टाइटल दे दिया. उसके बाद आपने एज वाला जो था वो दिखाया और उसका टाइटल दे दिया. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यू जस्ट सी, दिस इज व्हाट इज बेसिकली ओरिजिनल इमेज. आपने दिखा टाइटल और आपने ओरिजिनल इमेज यहाँ प्लॉट किया. सो दिस इज द ग्रे वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इमेज. Now, when you have applied the blurring kernel, so in that case, you got IM underscore blurred. This was basically the output that you got after applying the blurring. Okay, so you just say that IM blocks kernel. So आपको IM blurred मिला था. So I am just trying to show that. So this is a blurred version of the original image. So when you are going to apply the box kernel or a simple averaging kernel, the output is a blurred version. Okay, so irrespective of the pixel or the position, everything is getting blurred in this case. जब आप Laplace detection कर रहे हैं, so in that case you are going to basically get the edges, and you can see this edges also very clearly. Okay, so you see that this is what is the edges, and edges क्या होते हैं, they are going to be sharp transitions into the grace level intensities. So that's why I just say that near the
hair you are going to get near the mustache, or eyes you are going to get, and specifically near the strips. Okay, horizontal and vertical lines जो है वो आपको यहाँ पे देखती हैं. So Laplacian is able to detect the edges. Okay, so that is what is the utility of the Laplacian kernel, that is the second order derivative kernel. Now let us try to see applying the convolution to color images. This was basically a grayscale image. Now let us keep it as color. Okay, so I'm saying I am read images rkm.jpg as type np.float. Okay, so this will keep all the values intact. np.max, max आप प्रिंट कर रहे हैं तो जैसे 0 to 255 था, मैक्सिमम 255 वैल्यू वाइट है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जा रही है. Then I'm saying you are going to have different types of kernel. I'm going to give the name this time because of the effect. So हम कह रहे हैं एक sharpening kernel हम बना रहे हैं. So sharpening kernel np.array 0 -1 0 -1 5 1 0 -1 0. So if you just try to see that ये kernel भी हमने क्लास में derive किया हुआ था. Okay, basically जब आप high pass filtering कर रहे थे तब. Okay, high pass filtering and unsharp masking में you have added to original one and so on. So this is 0 -1 0 -1 5 -1 and then 0 -1 0. ये था आपका sharpening kernel that we have calculated, and I'm saying that I'm just passing it as a one-dimensional list. And since it was a one-dimensional list, I have to reshape it into 3 cross 3. Okay, with individual one element. ऐसा नहीं करना था तो आप जो पहले जैसे आपने कर्नल बनाया था आप वैसे भी बना सकते थे. Then you are going to have another kernel, okay, जिसका effect होगा embossing. Okay, so that we are going to calculate as np.array. Okay, -2 -1 0 -1 1 1 and 1 2 2. Okay, so this is what we are going to calculate, and again we will do that. So ये दोनों कर्नल हमने बना दिया है और ये हम अप्लाई करेंगे. So now I'm going to have I am sharpened image. So nd image dot convolve I am sharpening kernel mode equal to nearest. Then I am sharp equal to np dot click I am sharp 0 to 255 के रेंज में पूरे कलर्स हम प्रिजर्व कर रहे हैं as type uint 8. So clips 0 to 255 and convert them into unsigned integer. फिर दूसरा एक एम्बॉसिंग वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, इफेक्ट एम्बॉसिंग जैसा है. सो एनडी इमेज कन्वॉल्व आई एम एम्बॉस कर्नल मोड इक्वल टू नियरेस्ट and then you are going to have between 0 to 255. Now you can plot that. Okay, so I am saying 1 cross 3 आप कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो होगा ओरिजिनल इमेज होगा, दूसरा जो होगा वो आपका शार्पन्ड इमेज होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका एम्बॉसिंग इफेक्ट वाला होगा. तो दो कर्नल हमने डिसाइड कि ये कर्नल और ये कर्नल. अब उसका आउटपुट क्या है? अब मेरे केस में मुझे आउटपुट दिख रहा था इसलिए मैंने वैसे ही उसको नाम दिया है, but you can see that anything else can be. So this is the way you can decide upon any of the coefficient of the kernel, and you can just try out on the image and you can see what is the output that you are going to get. So अगर आप यहाँ पे देखें तो this is what the output is. Original image आपको मिल गया, and यहाँ पे आपको मिल गया sharpened image. Now if I just see this second image is basically a sharpened version of the first image. Okay, so sharpening is going to basically highlight the change, okay, comparatively better. Okay, it is opposed to smoothing or blurring, and that's why you see that you may be able to see some of the things. Say for example, here there is a one white strand of hair, okay, which is not possibly visible here, but here it is visible. On the mustache also you are getting some white. So it seems that the mustache is having some white hairs, and even you will find out here there are going to be crisp, okay, views. And even in the eyes you can just make out, and the eyebrows you can make out. Okay, the what do you say, stripes on the shirt is also very much clearly visible. So this is basically a sharpened version of the original image. And the second one, that you have basically created some random arbitrary mask and you have applied it, and you could just see that this is basically going to have an effect something like this. Now this is not basically a standard kernel. Okay, we have just tried it out. You can just try it on any other value and you can just see that what is the effect. So basically what we have demonstrated is we have just basically trying to demonstrate
the usage of the kernels in order to transform the original image. Okay, this is as simple as that if you are going to do it in Python or something similar to this. Okay, so that was basically applying a filtering technique onto the image. Okay, so or simply saying that we are going to apply uh, कन्वोल्यूशन ऑन टू द इमेज. ओके, कन्वोल्यूशन किसके साथ कर रहे हैं आप? एक इमेज के साथ कर रहे हैं, इमेज और मास्क के साथ कर रहे हैं. ओके, सो इन दैट केस वॉट एवर value comes out, that is how the output image will look like. Okay, so this is how you will be basically doing the convolution. Okay, so you have a convolve and you have convolve 2D. Okay, so these two functions will be basically helping you to um, get things done. Then you are going to have another one, that is a template matching with cross correlation between the image and the template. So here what you can do is that either you need to have your own template. Okay, पहले से अगर आपके पास कोई template हो तो आप directly template लगा सकते हैं और उसके बीच में cross correlation you can calculate, or otherwise you can calculate a template from your own side. So in this case, what we will be doing is that we will be actually creating a template ourselves from a miscellaneous face. So हमने वहाँ पे एक function use किया था, okay, and उसमें हमने एक miscellaneous baggage include किया था. So I'm going to have a face image. Okay, miscellaneous dot face. This is going to give you basically a face. Okay, and I'm saying grayscale equal to true, and minus miscellaneous dot phrase grayscale equal to mean. So we are basically calculating a phase, okay, using this formula. Okay, so miscellaneous में से हमें phase मिलता है, and we are calculating the difference and we are storing it as a this, and I will be creating a template from the same. So template image is going to be created. Template is going to be something similar to your mask that you are going to have. So np dot copy face image, और face में से आप एक छोटा सा रीजन जो होगा वो आप लेंगे. सो दैट इज से 300 to 365 and 670 to 750, which is going to be a right height of our image that is going to be loaded. So अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका इमेज है, इसके राइट आई का यहाँ का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो एज ए टेम्पलेट यूज किया गया हुआ है. Okay, so this is what the template you are going to use, and based on that, this is what the template you are going to have. And then using this template, we are going to do the cross correlation, and I will be going to basically get this result. So basically that can be used for pattern matching or object detection from the pool of say data. So now we are having correlation equal to signal dot correlation 2D face image comma template image, boundary equal to symmetric and mode equal to same. And then you have your what is it, tuple y comma x np dot unravel index np dot argmax correlation and correlation dot shape. This is going to be basically finding the match within the image. And then finally you are going to basically plot your figure. Okay, so you are going to first show the original image. So this is what the original image that you are going to have. After that, you are going to show the template image. So that's why I say the template image आप यहाँ पे कर रहे हैं, and उसके बाद आप cross correlation कर रहे हैं. So we say ax correlation dot imso correlation cmap आप कर रहे हैं, and then इसके बाद okay, this is basically a heat map kind of a plot. Okay, so cross correlation kar rahe hain, and then you just give this. So basically this kind of things can be used for matching certain structure or the pattern, and trying to retrieve the results. Okay, so we have seen that the serial correlation, we have seen the cross correlation. So this is how you can implement it into image processing domain. This is not a standard way of doing it, but just for the sake, okay, we have just used this code and we have just demonstrated it. अगर आप सिग्नल में कर रहे हैं या फिर अगर आप साउंड सिग्नल में कर रहे हैं, in that case cross correlation, serial correlation may be having more meaning. Okay, but anyhow, pattern matching or recognizing the same face or similar face or similar object can definitely be done with the help of a correlation and cross correlation. So we have basically done two practicals as of now. Okay, we have done two practicals as of now. One is basically talking about the basic image handling,
and displaying the images, and then converting an image from spatial domain to frequency domain, and frequency domain back to the image processing domain, that is an object reconstruction kind of. So basically image handling. We have also seen that what is the effect of sampling and quantization and different resolution onto the output image. ओके, एंटी अलाइजिंग भी हमने देखा, अप सैम्पलिंग भी देखा, डाउन सैम्पलिंग भी हमने देखा है. यू कैन ट्राई आउट विद डिफरेंट images. Obviously the quality of the image and original resolution of the image will have an effect on what kind of output you are going to get. So next time when we are going to come, we will be trying to show various different other types of operations. Specifically, we will try to see the intensity transformation, which will include negation, power law, histogram equalization, log transformations. Okay, in some cases the bit level slicing and similar kind of operations. फिर उसके बाद हम डायलेशन एंड इरोजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके, उस तरीके की चीज़ें देखेंगे. Then we'll try to also do some kind of a repetitive structuring element application like skeletonization, convex hull determination, and segmentation kind of problems, and so on. Okay, so that's what is basically the agenda for this. Okay, so maybe say 2 3 sessions, maybe we will just complete all the practicals so that you can also make the journals. I'll be providing you all these files to you so that you can try out at your own end also. Now if you have any questions, so please go ahead and ask. Okay, good. So you don't have any questions, no problems. You can just fill on the attendance sheet. I'm just putting the attendance sheet into the link window. When to submit the practical? Okay, so there is as such अभी तो हमने decide नहीं किया हुआ है. Once I complete all the practical and I'll share you the code and other things, तो उसके आप एक वीक में कर दीजिएगा. So I think your practical exams may be there by the end of this November. So maybe we can have a target of say 15 or 17 or something like that. कोडिंग पार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आपको थोड़ा सा पाइथन अगर आप कंफर्टेबल हैं, देन इन दैट केस थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करके वो हो जाएगा. इवन यू विल सी दैट इसके बाद के जो प्रैक्टिकल्स हैं, दे आर इवन मोर इंटरेस्टिंग and they are very simple because most of the time we will be reusing the earlier code itself. So you bit of little customization and you can just get through that. ओके, तो एक बार आदत हो जाएगी तो देन यू शुड बी एबल टू डू दैट. पाइथन आप अगर जुपिटर में करेंगे तो थोड़ा हैंडी आएगा. आइडियली में करेंगे तो देन दैट केस इट विल बी लिटिल दिस. ठीक है, नहीं आप 2 3 सेशन में हम उस लेवल पे आ जाएंगे वेर यू विल बी कंफर्टेबल. सो टुमारो आल्सो वी आर मीटिंग. कल का टाइमिंग मैंने क्या दिया है, मैं भूल गया. मैंने आपको टाइमिंग कल का क्या दिया है, लेट मी सी. I gave you. मैंने आपको दिया नहीं है अभी. So tomorrow we will have lecture from maybe 10 to 12 or again in the afternoon. But definitely all 6 days we will be having lecture. Okay, so ये week आप अपना थोड़ा सा रखिए because I will be taking so that maximum things are being covered and you should be relieved. I will also be giving you some set of questions as an assignment, okay, which you need to submit. This is going to be apart from your internal exam that we are going to conduct. The reason for doing that is that you will have some share of marks from the assignment and some from the what do you say टेस्ट एंड सम फ्रॉम प्रोजेक्ट. सो इन दैट केस किसी भी केस में अगर कोई थोड़ा कम अच्छा होता है तो दूसरे में से आपको मार्क्स मिल जाएंगे. सो बट इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड सबमिट ऑल दोस थिंग्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनिशियली दैट यू नीड टू डू अ मिनी प्रोजेक्ट. ओके, मिनी प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन द प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल को छोड़ के आप कोई भी चीज कर सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट में.
व्हेन इज द इंटरनल, इंटरनल की डेट मैंने आपको टेंटेटिव बताई थी, तो मे बी यू कैन हैव एन इंटरनल इन द नेक्स्ट वीक. ओके, सो यू वांट टू हैव, तो आप करिए, काम कीजिए, इंटरनल आप पहले 2 यूनिट पे ले लीजिए. ओके, सो 2 यूनिट रहेगा आपका इंटरनल के लिए. एंड नेक्स्ट वीक में आप इंटरनल ले सकते हैं मंडे को. ओके, सो मंडे यू विल बी हैविंग इंटरनल, एंड इंटरनल में आपको क्वेश्चंस देता हूँ. उसके पहले मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा, so in that case you can basically have an idea and what to study, how to study and those kind of things. तो आपका असाइनमेंट का भी काम हो जाएगा, आपकी पढ़ाई का भी काम हो जाएगा. ठीक है. ओके, दैट इज ऑल. मैं कल के लेक्चर का टाइमिंग डालता हूँ. आई थिंक बिकॉज टुमारो यू विल बी हैविंग योर DBMS ऑल्सो एंड माई लेक्चर ऑल्सो. सो आगे पीछे शेड्यूल होगी वो. So let's see. Okay. Anything else? If anybody has any issue or any query or something like that, they are free to ask. Now remember you are doing PG, तो PG में होने के बाद थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा मेहनत अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट डन एज द अंडर ग्रेजुएट. एंड रिमेंबर कि पीजी में आपके टॉपिक्स होते हैं, देयर इज नो हार्ड बाउंडेड सिलेबस, ऑल्दो इट इज बीइंग गिवन, लेकिन चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है. In that case, try to have a good horizon for all the topics and try to learn according to that. Okay, in the later portion we will be also having the revision also. So in that case, अगर किसी का कोई topic छूट गया है, then in that case I will be basically taking the topic as a revision also. चलिए ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, टाटा, एंड जस्ट फिल द attendance.